Good morning, all of you. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Sir, Sir, was asked sorry, beta. done the exercise till 9.2 start. Sir, Ahuja sir has done exercise till. Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो बोलो. I have a doubt in 9.1 C1 question. अच्छा एक मिनट बेटा वेट करो, अभी अभी बात करते हैं हम लोग. जस्ट वेट अ मिनट. हाँ जी बताइए. We have done till where? Sir, We are doing sir, the we have chapter done till decimals. 9. 9.2. Yes, sir, 9.2. We are doing Sir, exercise 9.2. Sir, 9 point. We have to start 9.3. We have done exercise 9.2. We have completed, all of you. Sir, we have completed 9.2. Very good. We have to start 9. Have you all Yes. completed? Everyone, have Sir, you all I have a completed question. 9.2? एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको. Yes, sir, we have completed 9.2. Now we have to start from 9.3. Find the product one. Very Yes, good. sir. Very good बेटा. निहित आप बताओ क्या कह रहे हो बेटा. Sir, in 9.1 exercise C1, sir, I have a doubt. Sir, you have tell the short trick how to do this. Can you tell it again? Sir, I am giving the question 10.1. Sir, 6.345. Express as fractions in lowest terms. You want me Sir, to you tell have the this? You want me to tell short this again? right? 6 So I am point. saying that, sir, when we are doing this exercise, previously you have told a short trick to do this. Yes. Can you Yes. tell it again? Yes. 6.345. Yes, sir. 6.345. In this, you have to write the number in fraction, expressed as a fraction in lowest term. Okay. So what we can do here, we can just write 6 as the whole number and only write this decimal part in fraction 345 upon 1000. Why dividing by 1000? Because decimal, यहाँ पर decimal के बाद how many digits are there? 4 digits. Sorry, 3 digits are there after decimal. So we will Sir, write 3 zeros. Now just write it in lowest terms. sir. So let's divide the numerator and denominator both by 5. 345 divided by 5 and denominator also divide by 5. Okay. So 6 whole, what is 345 divided by 5? You will get 69 upon 200. So this is the answer. 6 whole 69 upon 200. Easy. Eh? Okay. Sir, Yes. Yes. sir, in exam, can we use this small method? Yes. Yes. Of Yes, course. answer come in the lower.
Sir, if the answer come, if we see do the long method, sir, if the answer come in a proper fraction, so how, sir, this thing will work? Proper fraction. बेटा इसमें जब भी देयर इज अ डेसिमल नंबर लाइक दिस, जब भी ऐसा डेसिमल sir. नंबर होगा जिसमें होल नंबर भी होगा, 6 इज द होल नंबर, दिस इज द होल नंबर Yes. 6, डेसिमल नंबर ये है आपका 0.345, तो हमेशा Yes. आंसर इम्प्रॉपर ही आएगा आपका. ओके, Sir, all the, sir, for all example, the, for example, if the number is like this 0.13, now Sir? here the whole number is 0, whole number यहाँ पे 0 है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा. ओके, तो 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज 0 हैज नो वैल्यू, सो जस्ट राइट 13/100, ये हो गया फ्रैक्शन में. तो ये ट्रिक आपको सिर्फ Sir? तभी लगाना है व्हेन देयर इज अ होल नंबर. समझ गए? okay, sir. Sir, if the question is 32.345, so sir, can we use this method? अरे ऑफ कोर्स 32 कुछ भी हो, 32.345 ये लो, 32.345 लो, ऐसे लिख लो, 1256.27 लो, 1256.27/100 आंसर हो गया. आगे सिंपलीफाई कर ही नहीं सकते. 32.345 32 होल 345/1000 सिंपलीफाई कर लिया, 32 होल 69/200 आंसर आ गया. बताइए इजी है या नहीं है? Okay, sir. सही है बेटा, टेंशन में तो Yes, नहीं sir. हो? No, sir. ठीक है. Excuse me, sir. यस, Sir, can you tell the exercise 9.1 E part question number 4? ई पार्ट क्वेश्चन नंबर 4. Sir, it is very easy. Sir, 5.32 is the answer. 5 plus 3/10 plus 10 plus 2/100. So So is equal to 5 5.32. So sir, 5.32. 5.32. ये Two. 3/10 क्या शो कर रहा है? That 3 is at the 10th place. 3 का प्लेस वैल्यू क्या है? 3 is at 10th 10. place 30. and 2 is at Sir, 100th place. तो ये 5.32 आ गया आंसर. 110th place. समझ गए? Sir, sir, in this question we can write like this also, that 5 plus by 0.3 plus by 0.02 and then we Yes, plus yes. them. Yes, then- yes. You can write it like that also. 5 plus 0.3 plus 0.02 add करके 5.32. Okay. डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. फाइन. एनी अदर डाउट बच्चों? No, sir. No, sir. नो डाउट, पूछ लो. इफ देयर इज एनी अदर डाउट यू कैन आस्क. No, sir. नो? No, sir. ओके, No, sir. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट topic. I think we have to start with exercise 9.3. Gaurav sir has already discussed till exercise 9.2. Gaurav sir ने कर लिया आपके साथ? No, sir. Ahuja sir has done. हाँ, वो उनका नाम बेटा गौरव सर है, आहूजा उनका सरनेम है. His name is गौरव सर. ठीक है, बहुत फेमस टीचर हैं, आउटस्टैंडिंग टीचर ऑफ मैथ्स. Question number 1. Exercise 9.3. Question 1. 5.23 into 10. We have to find the product. हमें multiply करना सीखना है 10 से. बेटा, there is a very easy method. Exercise can we do in a book?
Sir, because it is very simple. Yes, we will do it in the book. Just write the answer in the book. देखो बच्चों, जल्दी से देखो, जल्दी इधर देखो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5.23. When we have to multiply this number by 10, तो डेसिमल को राइट में मूव कराना है. कितने प्लेसेस मूव कराना है राइट में? ओनली वन प्लेस, बिकॉज 10 में कितने जीरोस Sir, हैं? so the answer is 10 52.3. 10 के पास कितने जीरोस होते हैं? जल्दी बताओ. हाउ मेनी Sir, जीरोस? one. 1 जीरो. Sir, तो one. एक The one. तो राइट साइड में एक प्लेस का जंप करा देंगे. करा दोगे जंप? Yes, sir. Sir, 20. आंसर 52.3. 52.3. प्रॉब्लम हो गई? डिफिकल्ट है क्या? No, sir. No, Okay. sir. Sir, this is, but we have to, if we have to multiply by 10, sir, it's 14, like number 10. बेटा बता निहित बेटा परेशान मत हो. अभी आएंगे सब टाइप की क्वेश्चन, सब बताएंगे. डोंट टेक एनी टेंशन. सो डेसिमल को 3.4 डेसिमल को एक प्लेस राइट में मूव कराएंगे. कितना बन जाएगा बेटा? 34. डेसिमल तो गायब हो गया. 34 के बाद डेसिमल आगे क्या करूंगा मैं? यहाँ तो आगे कोई डिजिट ही नहीं है. सो नो यूज ऑफ डेसिमल, जस्ट राइट 34. क्लियर और नॉट? Okay, Yes, sir. Yes. Sir, we can write 34.0. Sir, we can write 34.0 लिखने का क्या फायदा है? जस्ट राइट 34. 34.0 is equal to 34 only. ओके, तो उधर भी zero है ना? आया समझ में? नहीं आया बच्चों? लिख दो सीधा. Yes, sir. थर्ड Sir, वन. आगे Sir, से third sir, will be Sir, 2.5. 0.5. Yeah, Equal to, sir, 5.2 0.5.2. answer. 0.5.2. 5.2. 5.2 या Sir, 0.5.2 एक ही बात है. 5.2 is the answer. Yes. So all of you all are going to do. नहीं, मैं ही बताऊंगा, आपको नहीं करना है. Question 4. I will Sir, only tell. question 4 answer is the 731.1 is the answer, sir. 731.1. 731.1. बहुत चालाक हो गए बच्चे. Very good. Very nice. Very clever. Very smart. Sir, how is the answer is not? Sir, how 73.1? Yes, sir. नहीं बेटा, Sir, 731.1 है. सही से देखो, 1 भी तो लगा हुआ है. Sir, अभी आपने Sir, लगाया है. अरे तो मैं भी तो Sir, you have इंसान put हूँ. now. ये मैं शो कर रहा हूँ कि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है. 731.1. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. Sir, we will not put a 27.4. zero in it. Sir, we will not put a zero in it. क्यों? Sir, वाई sir, वाई कहाँ जीरो कहाँ लगाएंगे? निहित एक मिनट, निहित को बड़े After डाउट है. sir, after the whole number, after decimal क्यों point. क्यों लगाएंगे बेटा? क्यों लगाएंगे? सिर्फ एक प्लेस का जंप कराना है. डेसिमल को क्यों लगाएंगे जीरो? बताओ. ठीक है, 100 आ गया. Sir, the अरे वाह, answer is देखो बच्चों 2000. बस वरिन बेटा एक मिनट रुको. बेटा वरिन, तुम तो भाग जाते हो गाड़ी पकड़ के. देखो, सो 27.4 डेसिमल को कितने प्लेस का जंप कराओगे? यहाँ पर देखो 100 में कितने जीरोस हैं? कितने जीरो हैं 100 के पास? Sir, 2 जीरो. 2. तो डेसिमल को कितने प्लेस का जंप कराना है? Sir, 2. Sir, 2. Sir, एक 2. और दो प्लेस जंप कराना है. तो यहाँ पर Sir, we will यहाँ पर put तो एक ही 10. डिजिट है. 2740 लगा देंगे लास्ट Zero. में. आ गया समझ में? हो गया 2 प्लेस का जंप. Yes, sir. Sir, 274. 2740 is the answer. क्लियर और नॉट? जल्दी बताओ एवरीवन, क्लियर और Sir, नॉट? clear. Sir, clear. Sir, clear. Okay. Clear. Do all the parts in question number 12. Yes, sir. हाँ करिए. Sir, I have done. Okay. डन. करो बेटा, जल्दी करो. Do all the parts till question number 12. That means complete the exercise. 9.3 exercise complete कर दो. फटाफट कर दो.
Okay, we all have completed the exercise. I am telling you all the answers. Yes, sir, Everyone, please completed. check Yes, your sir, answers. completed. Check your answers, all of you. मैं बता रहा हूँ. Okay, everyone. Yes, So sir. fifth तक हमने कर लिया है. Sixth one. The answer is 71156.3. Yes, sir, correct. Sir, correct. 71156.3. ठीक है. You all please check my answer. I am telling my answers. Please tell me Yes, my sir, your answers are answer right. is correct. Sir, your Very answer good. is correct. Thank you, beta. Please keep on telling me whether my answers are right or wrong. Okay, next one. My answer is 0.5. Sir, correct. Sir, your answer is correct. Thank Yes, you. sir. Thank you so much. Next one. 5.6. My answer Sir, is your right or no? answer is correct. Sir, correct. 5.6. My answer is correct. Yes, Thank sir. you. Thank you, beta. Thank you. You all are such good students. I am learning from you all a lot. Very good. Everyone wants students like you. Every teacher wants a student like you so that every teacher can learn from such good students. 5.6. Okay. Next one. Ninth question. The answer is 3512. 3,512. Yes, sir, correct. Yes, sir, correct. My Sir, answer correct. is right. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Your sir. and mine is a good. My maths is good. Yes, Yes, sir. sir. Your math is very good. Am I a good learner? Yes, Yes. sir. Yes, Very sir. nice. Okay, next one. The answer, 10th one. The answer is 3. My answer is 3. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Correct. Sir, your answer is correct. Sir, your answer is correct. Can Sir, you you are all? writing or telling the answer in the board? Sorry, beta. I'm not writing answers on the board. I'm just telling orally. Okay. Do you want me to write the answers on the board? No, sir. No, sir. No, sir. Sir, it is fine. As you It said. is fine. So 10th one, the answer is 3. Okay. And Yes, sir. 11th one, the answer is 2386. Sir, My correct. Sir, correct. very Tenth nice. one answer is 3.0. 3 3.0 और 3 एक ही बात होती है. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. 3.0 and 3 is the same thing. Okay. 11th one, 2386. Yes, My answer is sir. right. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Can you all say Yes, some sir. praising words for me? Can you all Yes, praise sir. me? Well done. Sir, well done. Keep it up. Thank Well you. done. Keep it up. Thank you, beta. Thank you so much. 2386. Okay, last one. Last one is a little difficult for me, but I will try my best. 51720. Is it correct? Sir, Sir, it the is answer correct. is Sir, your correct. answer is Correct. correct. Sir, well Five done, one. sir. Thank you, Well beta. done, sir. Thank you so much. 51720. That means my all answers are correct. Very good. Very nice. My confidence is really rising up now. I have started to believe that I can also do maths. I'm finding maths very interesting now. So now we can do the 9.4 exercise. Sorry, beta. So now we can do the 9.4 exercise. Ah, yes. Exercise Now we are going to start very difficult exercise 9.4. Sir, it is very easy. We have to divide as simple as we do. हाँ. And point अरे. यहाँ पे आएगा, वहाँ पे we have to put point. Yes, you are right. Absolutely. Thank you for telling me also. Question number 1. So we have to do it in the notebook. Yes, beta. We will do this in the notebook. All of you.
Please take out your notebook for exercise 9.4. Yes, sir. Okay. So we have to divide 12.4 by 3. Okay, everyone. 12.4 divided by 3. So we will use the long division method for this. Okay, everyone. Please look at the board. 12.4 divided by 3. Very nice, easy method. Short and sweet. 12.4 is not a good number. कोई बात नहीं. We will do it. 12.4 is not a good number. We will find out the answer in 2 decimal places. Okay. Ready, Sir, everyone? sir, I have found the answer. The answer is 4.10. 4.10. Yes, sir, 4.10. Okay, beta, I am doing it on the board, everyone. Are you all ready? Pay attention Yes, on the board. Even if you know it, then also please pay attention on the board. So 12. Okay, let's write 4 here. 3 into 4 is 12. 3 into 4 is 12. Okay. 12 minus 12 is 0. Okay, 0. Now we will copy down 4. Now 4 is after decimal. Am I right? 4 यहाँ पर डेसिमल के बाद से हमने कॉपी किया है. So we will put a decimal in quotient also. जैसे ही हम एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे ही हम डेसिमल के बाद वाला फर्स्ट डिजिट कॉपी करेंगे, हम क्वोशंट में भी डेसिमल लगा लेंगे. क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस. Yes, sir. ओके, सो नाउ 3 into 1 वन टाइम जाएंगे. 3 into 1 is 3. माइनस कर लिया, रिमाइंडर 1. अभी हमको 2 डेसिमल प्लेस में आंसर निकालना है, नॉट 1 डेसिमल प्लेस. आंसर यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना. ओके, देखना सब लोग ध्यान से. सो दिस इज 1 1. नाउ हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर क्वोशंट में ध्यान से देखो, वी हैव ऑलरेडी यूज्ड अ डेसिमल. डेसिमल हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ना, क्वोशंट में Yes. लगा चुके हैं. तो अब हमको एक 0 फ्री मिलेगा. हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, डेसिमल लगने के बाद एक 0 फ्री मिलता है रिमाइंडर में. Sir, -9, 3 मिल sir. गया फ्री, 0 फ्री मिल गया. Sir, -9 So 3 remainder into 3 9. 10 minus 9 1. अब इसके आगे नहीं करेंगे क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही आता रहेगा. So just find your answer in 2 decimal places. 4.13 is the answer. Clear or not? Everyone understood? Sir, clear. If there is any doubt, you can ask. अगर जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. If it is clear, then only I will start doing the next question. I want an answer from everyone. Is it clear or not? Yes, sir. Okay, सिर्फ आद्या भाटिया को क्लियर हुआ है, बाकी किसी को क्लियर, और अपूर्वा शौर्य को क्लियर हुआ है. Sir, clear. Yes, sir, clear. वरिन गोयल को भी क्लियर हो गया. बस 3-4 बच्चों को क्लियर हुआ है. वरिन गोयल, आद्या, अपूर्वा एंड शौर्य. Sir, I also clear. Sir, clear. समृद्ध को भी क्लियर हो गया. मेरे को भी सर क्लियर हो गया. मांडव्य को भी हो गया. Sir, मेरे को चलिए, भी clear हो गया. very nice. चलो, very good. Question 2. Let's start question 2. Everyone has understood the first one, so let us start the second one. Question 2 कह रहा है 51.32 डिवाइड कर लो 2 से, ऐसे कह रहे हैं. चलिए हम लगाते हैं लॉन्ग डिवीजन. 51.32. ओके,
So 5. 2 into 2 is 4. 2 twos are 4. 1 remainder. ठीक है? 1 remainder. Now next one copy हो गया नीचे. आ गया. 11 बन गया. 2 5s are 10. 2 5s are 10. Sir, Minus now we will put one remainder decimal. 1. अब देखो बेटा बच्चों, everyone, ये हो गया. Sir, now Now we are taking down 3 को लेके जा रहे हैं नीचे. 3 तो डेसिमल के Yeah. बाद में है, तो क्वोशंट में डेसिमल लगा देंगे. क्लियर और नॉट? क्वोशंट में डेसिमल लगा दिया. वेरी Yes, गुड. sir. So 6 are 12. 2 6s Sir, are 12. Remainder 1. Sir, again 6 and the Sir, answer again 6. 25.6. Then 2 Sir, copy 2. 25.6. 12 हो गया. Again Sir, 6. 25.6 is the correct answer. Answer 25.66. Clear, everyone? 25.66. Yes, sir, I have done. Okay, so you all will try the third question yourself. Try the third one. Try the third one. हो जाएगा. थर्ड वाले का आंसर ट्राई फाइंडिंग द आंसर इन 3 डेसिमल प्लेसेस. 3 डेसिमल प्लेस तक निकालने की कोशिश करो. ओके. जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर में 2 डेसिमल प्लेस तक किया था. ट्राई फाइंडिंग इन 3 डेसिमल प्लेसेस. Sir, but how we will get to that? We have to find this question answer in 2 decimal place or वो 3 चॉइस decimal है, वो place. हमारी चॉइस है. जैसे वो आई विल टेल यू फाइंड योर आंसर इन 2 डेसिमल प्लेस और 3 डेसिमल प्लेस. दैट आई विल टेल यू. दैट इज चॉइस. वी विल फाइंड इन 2 और Sir, 3. but in exam, तो sir, so in एग्जाम में exam, भी मैं आपको बताऊंगा. आई विल राइट इन द क्वेश्चन फाइंड द आंसर Okay, इन 3 डेसिमल प्लेस. आई विल राइट इट इन द क्वेश्चन. ओके, डोंट वरी. sir, I have found the answer. Okay, just send your answer in the chat box, all of you, those who have found the answer. Sir, Send your answer in the chat box. sir, next class is also yours. No, beta, next is not. No, it is Saturday today. It's Yes, not sir, my your period. only. My only maths period only. Yes, sir. Acha, let me see the timetable. Yes. It's my period only. Very good. Maths only. चलो अच्छी बात है. Everyone send your answer in the chat box. Those who have done the third part, they will find the answer for the fourth part. बेटा fourth part करो इसके बाद. In the fourth one, find your answer in 2 decimal places. Okay.